দেখ এখানে here the question is what is the meaning of sutures? What is the meaning of sutures? তাহলে sutures of the skull, sutures mainly found कहाँ पे मिलेगा? स्कल में। और completely देखिए it is completely fibrous joint होगा, completely fibrous joint that connect the skull bone. The sutures connect the skull bone. They appear as thin lines on the skull. Q they appear as thin line on the skull. Then what is the meaning of sutures? Then sutures actually found in skull. It is fibrous joint that connect the skull bones. किसके साथ कनेक्ट रहेंगे? स्कल बोन, and they appear as the thin line on the skull. पहले नेक्स्ट देखिए स्मूथ मसल, कहाँ पे डिस्कशन करेंगे? तो स्मूथ मसल के ऊपर देखिए जी। स्मूथ मसल क्या हुआ? स्मूथ मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल? जी स्मूथ मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल से कैसे डिपेंड है वो देखिए. In function, obviously their function totally different. In function, इसके function पूरा अलग है. Unlike skeletal muscle is capable of maintaining, देखिए unlike skeletal muscle is capable of maintaining tone for extended periods. पहले देखो कि unlike skeletal muscle is capable of maintaining tone for extended periods. Tone for extended periods and often contracts involuntarily. Often contracts involuntarily. तो एक्चुअली स्मूथ मसल का कैपेबिलिटी ओपन कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलंटरी. एट ए सेलुलर लेवल स्मूथ मसल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इनवॉलंटरी. पहले सेलुलर लेवल में स्मूथ मसल क्या हुआ? कंप्लीटली इनवॉलंटरी एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल. At a cellular level, smooth muscle involuntary, act as involuntary and non-striated muscle. चलिए देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक. स्मूथ मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल. किसके साथ डिफर हुआ? स्केलेटल मसल के साथ. कैसे? ऐसे फंक्शन. The unlike skeletal muscle is capable maintaining tone for extended periods and often contracts involuntarily. At a cellular level, smooth muscle can be described as an involuntary, non-straight muscle. Cellular level, smooth muscle can be described as involuntary and a non-straighted muscle. देखिए रेड मसल. अभी रेड मसल का कैरेक्टरिस्टिक देखो. रेड मसल क्या हुआ? रेड मसल आर ऑल्सो कॉल्ड स्लो ट्विस्ट मसल और एरोबिक मसल. ये बोलता है स्लो ट्विस्ट मसल और एरोबिक मसल. They have thin muscle fiber with dark filament. Thin muscle fiber with dark filament that contains a pigment called myoglobin. जो पिगमेंट यहाँ पे इसका नाम myoglobin. तो रेड मसल का पिगमेंट का नाम क्या है? myoglobin. Which gives them red color. तो किसके लिए रेड कलर हुआ? Because it contains myoglobin. तो रेड मसल actually contain myoglobin. So इसलिए इसका कलर will be red. ठीक है, very very important. पहले मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? पहले मायोग्लोबिन एक्चुअली इट इज ए प्रोटीन दैट फाउंड इन आवर स्ट्रेटेड मसल, दैट मींस रेड मसल. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक देखो बाबू, थिन फिलामेंट. थिन फिलामेंट्स. व्हाट इज थिन फिलामेंट्स? देखिए एक्चुअली मेड अप ऑफ टू हेलिकली अरेंज्ड फिलामेंटस पॉलीमर. Helically arranged filamentous polymer of the protein. Helically arranged filamentous polymer of the protein. कौन सा प्रोटीन? एक्टिन. Together with a long filamentous protein, tropomyosin. Long filamentous protein tropomyosin that lies in the groups of the helix as well as associated globular protein, troponin. पहले ट्रोपोनिन का कैरेक्टरिस्टिक देखिए. ग्लोब्यूलर प्रोटीन ट्रोपोनिन
इसके एक्चुअली की एसोसिएटेड प्रोटीन पाবো एक्चुअली एसोसिएटेड प्रोटीन তাহলে main function thin filament the made up of two helically arranged filamentous polymer of the protein जिसका नाम actin together with a long filamentous protein tropomyosin তাহলে बहुत ही important topics tropomyosin পাবো tropomyosin that lies in the groups of the helix as well as associated globular protein जिसका नाम troponin troponin कहाँ पे फाउंड होता है फाउंड एट इंटरवल्स along the filament फाउंड एट इंटरवल्स along the filament फिर देखिए the thin filament actually की made up of two helically arranged filamentous polymer of protein जिसका नाम actin together with a long filamentous protein जिसका नाम tropomyosin बहुत इंपॉर्टेंट है that lies in the groups of the helix as well as associated किसके साथ एसोसिएटेड हुआ जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिसका नाम ट्रोपोनिन फाउंड एन इंटरवल along the filament next above the topics we can write this question बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू देखो पहले स्मूथ मसल इसके किसके साथ मिल सिमिलरिटी हुआ स्मूथ मसल ऑब्वियसली इनवॉलंटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बाद देखिए ट्रोपोमाइसिन किसका साथ सिमिलर ट्रोपोमाइसिन थिन फिलामेंट के साथ सिमिलरिटी हुआ ठीक है रेड मसल पहले ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट दिस मैटर द रेड मसल कंप्लीटली contains protein that is called myoglobin so skull actually की सूचर्स तो skull इसके साथ टोटल सिमिलरिटी हुआ सूचर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूचर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कल ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कल पहले देखिए ऑलरेडी मायोग्लोबिन क्या हुआ थिन फिलामेंट क्या हुआ सूचर्स क्या हुआ इनवॉलंटरी टोटली कंप्लीटली डिस्कस्ड ठीक है इसलिए तुम मिलाइए ऑप्शन ए 4 स्मूथ मसल 4 इनवॉलंटरी ट्रोपोमाइसिन थिन फिलामेंट देखिए B2 रेड मसल 1 मायोग्लोबिन और स्कल शूटर्स D3 सो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए राइट आंसर ओके बाबू बाय